very मैंने सोचा था I will not discuss the sources, but I did have a quick discussion about it. So I will cover the remaining sources in the question and answer session, which will be taking place tomorrow. I don't want to मैं इसको और ज़्यादा खींचना नहीं चाहती इस topic को. So we'll just discuss it tomorrow. Today we'll just do some signs and symptoms, diagnosis and management. It's going to be a quick session, so I hope all of you can attend the whole of it. Before we start the session proper, I would request Sonali to please come forward and conduct the morning prayer. Over to you, Sonali. Thank you, ma'am. Good morning, everybody. 14th March 2022. आज की प्रार्थना. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Thank you, ma'am. Have a lovely day. Thank you, Sonali ji, for that lovely prayer this morning and attempting to move us into the parasympathetic mode. So, sir always believes that this is what would make us more, conducive, the environment more conducive to learning. And on that note, I'd like to start the session now. So, it's about all about vitamin K yet again. Just 1 second, I'm having a little bit of a trouble with my slides. So, that's it. बहुत सारी presentations हो गई है. PowerPoint is saturated with the presentations now. So just 1 second. So let me just quickly review the sources before I start off the So we had discussed yesterday that anything green usually, in fact, in this slide I'd written, just notice the greens. It's all everywhere that you go for vitamin K sources, all these greens that you have. And in fact, ye sab, of course, they must be inspired from Western literature. Hamari jo desi greens hain, we have, ek local sabzi hoti hai, which I think बहुत सारे बड़े घरों में probably नहीं आती होगी, which is चलाई का साग. And all these little small little if you see that the less affluent sections of the society, they focus a lot on these local and cheap vegetables, and their immunity is very good. So this could be one of the reasons. So try to go to the local markets and find out what are the local vegetables that are available and try to consume them. So of course kale and everything is not available here, and you don't have to consume that. जो हमारी देसी सब्जियां हैं, देसी हरी सब्जियां हैं, they are also good enough. इसमें आप देख सक रहे हैं, we have okra is the Chinese name for भिंडी. तो ये भी आप इसको ये भी कंज्यूम कर सकते हैं. This is also rich in vitamin K. Okay, now we are going to talk about today's topic, which is the diagnosis, how to understand that someone has vitamin K deficiency and how to treat it. So who are susceptible? So सबसे पहले एक चीज का मैं आपको ध्यान दूं, आपका ध्यान लाऊं इस तरफ कि जितने भी नवजात शिशु होते हैं, all neonates are deficient in vitamin K. तो आपने देखा होगा हमेशा जब भी एक हॉस्पिटल बर्थ होती है, हॉस्पिटल में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उसको विटामिन के दिया जाता है by default. Every single neonate is usually given vitamin K. And why is that? क्योंकि जो ये vitamin K है, ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता. तो neonates will naturally be, neonates मतलब एकदम जो अभी बस बच्चा पैदा ही हुआ है, first 28 days, 28 दिन से छोटा बच्चा.
सो दे विल ऑलवेज बी डिफिशिएंट इन विटामिन के, इनको कमी रहेगी विटामिन के की, और इसके लिए इनको हम जब तक ये सेमी सॉलिड फूड नहीं खाते तो दे विल बी विटामिन के डिफिशिएंट, बिकॉज जो इनके दूध है, दूध में भी विटामिन के की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू बी सप्लीमेंटेड विद विटामिन के, नहीं तो अगर इनको ब्लीडिंग हो गई तो वो ब्लीडिंग को रोक पाना मुश्किल होगा. सो इसीलिए विटामिन के दिया जाता है टू ऑल द न्योनेट्स इन द हॉस्पिटल. एक आपने हमेशा पर्ची में देखी होगी, विटामिन के का सप्लीमेंटेशन जो है ये दिया जाता है. इसके अलावा जो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट हैं उसमें आप देखेंगे 30% लोग जो हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी उनको होगी, लेकिन ये बहुत it is going to be rarely resulting in clinically significant bleeding. ऐसा नहीं होगा कि विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो उनको अचानक से आपको ब्लीडिंग की, मैं अभी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको, वो वैसे प्रेजेंट करेंगे. सो इस तरह के जो केसेस हैं जिनमें ब्लीडिंग हमें दिखती हैं, वो ऐसे केसेस होते हैं जिनको कुछ मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं. मैंने आपको बताया है विटामिन के इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, एंड अगर आपको फैट को प्रोसेस करने में आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, सीलियाक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस तरह की कोई बीमारी है, तब आपको परेशानी होगी. या फिर अगर आप कोई ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो विटामिन के की मेटाबॉलिज्म को के ऊपर असर डालता है और विटामिन के आपके शरीर में कम करता है, देन यू माइट आल्सो बी प्रेजेंटिंग विद दोस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग. अदरवाइज यूजुअली इसके कोई क्लिनिकल सिम्टम्स एज सच नहीं होते. So now moving on, so let's see what are the vitamin K deficiency symptoms. So you can have some episodes of bleeding. So no नाक से bleeding, या फिर आपके क्या कहते हैं, आपके जोड़ों में यहाँ दर्द होना, दिस कैन ऑल्सो बी सिम्टम ऑफ विटामिन के डिफिशियंसी. सो यू कैन हैव इन द ग्रोइंग चाइल्ड, you can see that there could be some poor bone development. Gums में से bleeding होना, this is also a part of vitamin K deficiency. It could be अगर आपकी bleeding हो रही है regularly, so this is bleeding gums. मैं आपको बताऊं, this is a very ominous sign. So dentists don't like bleeding gums at all, and ये आपको अपने dentist को definitely दिखाना चाहिए. And whether or not it is a vitamin K deficiency, that your dentist might figure it out. But bleeding gums is a very ominous sign. आपको ये जिस तरीके से हम खांसते हुए अगर कभी हमारे बलगम में blood आ जाता है, and that is a very ominous sign, वैसे ही bleeding gums is also a very ominous sign, and that should not happen. So आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें. We will try to arrange a session here with a dentist who can talk about this very important topic, and we'll try to take it up. So इसके साथ increased risk of में आपको हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस ये भी आपको हो सकता है, एंड यू कैन हैव सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज. सो अगेन विटामिन के जो भी डेफिशिएंसी के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, मोस्टली दे आर रिलेटेड टू ब्लीडिंग एंड मे बी रिलेटेड टू बोन डेवलपमेंट. सो आप देखिए, इस तरह के अगर आपको ब्रूजिंग बहुत कॉमन है तो ये हो सकता है कि कोई आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी हो. सो ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग एक्सेसिव एंड इजीली, अगर आप ब्लीड करते हैं या एक्सेसिव इजीली आप ब्रूज करते हैं, ब्लीडिंग जब होती है तो बहुत ज्यादा रुकती है, तो आपको ये विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है. Why is vitamin K important? Just to know that it fights cancer, it supports heart health. So these are very vague, sort of roles that we are saying. But I think आज की understanding के लिए ये काफी अच्छा है, and that is why I wanted to I wanted to project this. So it regulates blood clotting, इसके बारे में हमने बात की. It improves bone health, इसके बारे में हमने बात करी. Insulin sensitivity को enhance करता है. So this is important and you need to understand this. It supports brain function. Again, बहुत vague है, but सच्चा है. So it fights cancer. So I wouldn't say it fights cancer, but it might have a role in preventing cancer. And it supports heart health, and that we agree with. It reduces menstrual pain and heavy bleeding. So this is also important. So menstrual pain and heavy bleeding में I would not say कि अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है, विटामिन के की सप्लीमेंट्स की जरूरत है, लेकिन आप ये फूड सोर्सेज देखिए, फूड सोर्सेज से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं. So this was a nice image that I thought I would like to I wanted
wanted to share with you. अब देखिए mostly greens हैं, so आज अपने एक नया हरी सब्जी जो है आज आप consume करना शुरू करें. If you can do that, then that would be great. And if there's anyone here who's doing it, who's consuming a new green vegetable today, please do post it in our group so that we know that we are reaching some population. So now let's come to the diagnosis of vitamin K deficiency. So prothrombin time मैंने आपको बताया था. This is uh, is important in vitamin K deficiency diagnosis. Prothrombin time जो है, this is it has served as an indicator of vitamin K status because of the effect on plasma prothrombin. So लेकिन 50% तक कम आपका decrease होना चाहिए prothrombin time में before the prothrombin time becomes abnormal, and this is a non-specific test. लेकिन ये एक अगर हम एक primary level पे हम देखें तो prothrombin time is quite it's widely used. इसके अलावा विटामिन के जो अगर जब हमारे शरीर में विटामिन के कम हो जाता है तो देयर इज दिस प्रोडक्शन ऑफ अ मार्कर कॉल्ड पिवका 2. सो पिवका 2 जब है ये बढ़ जाता है जब आपका विटामिन के कम हो जाता है. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट. अगर हमें रियली इफ वी आर सस्पेक्टिंग vitamin K deficiency, then this is the test. Again, this is a little bit of an expensive test, so this can be done, but this is a very sensitive marker of vitamin K deficiency. So PIVKA2 has minimal variability. It is a very sensitive test, let's just know that, and it is very highly influenced by vitamin K plasma and serum concentration. And PIVKA2 levels, they start to become apparent in individuals consuming less than 60 micrograms of vitamin K per day. अगर आप 60 माइक्रोग्राम से कम अगर कंज्यूम कर रहे हैं, of course this is for a 60 kilogram individual, so depends on your body weight as well. So अगर आप ये इतना सेंसिटिव है कि अगर आप अपने डेली रिक्वायरमेंट से कम ले रहे हैं तो ये आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. So at birth, elevated PIVKA2 levels exist. मैंने आपको बताया था हर एक नवजात शिशु में विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है. So 10 से 50% of newborns में आपको ये elevated levels मिलेंगे, and 70% of non-supplemented healthy infants on day of life 70% non-supplemented healthy infants on day of life 4 or 5. So चौथे या पांचवें दिन में अगर हम देखेंगे एक नवजात शिशु को तो 70% में जिनमें सप्लीमेंट नहीं दिया हुआ उनमें आपको ये मिलेगा. सो न्यूनेट्स में दिस इज वेरी वेरी कॉमन, एंड अगर एक हॉस्पिटल बर्थ हो रहा है तो दे विल गिव यू अ विटामिन के इंजेक्शन. ये बच्चों को दिया जाता है. Direct measurement of vitamin K plasma levels show highly variable data. So जो vitamin K के अगर हम directly इसको measure करने की कोशिश करें तो ये जो इसकी जो information हमें मिलती है वो बहुत correct नहीं होती, बहुत सारी चीजों से influenced होती है, इसलिए usually हम directly vitamin K के levels नहीं check करते. इसके अलावा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसका नाम है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री. सो अगेन दिस इज मतलब इट्स मच अडू अबाउट नथिंग, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. वी कैन जस्ट चेक इट बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम गिव्स अस अ गुड सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इट. एंड अगर हमें सच में बहुत सस्पेक्शन है एंड बहुत ज्यादा किसी को क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग है तो हम पिवका 2 स्टेटस जो है ये हम चेक कर सकते हैं. सो वी डोंट हैव टू गो इनटू सच कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट्स. Just 1 second. एक second, please. Just 1 second.
ठीक है. सो विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग. सो अगर किसी को विटामिन के से रिलेटेड विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, देन व्हाट आर द हमें किस तरीके से उन्हें हमें डायग्नोसिस हमें करनी चाहिए. तो उनके जो या तो उनके प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल होंगे या बढ़े हुए होंगे, एंड फाइब्रिनोजेन जो है ये नॉर्मल रहेगा, एंड डेग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एब्सेंट होंगे. अगेन दिस इज कल इनफैक्ट यहाँ पे किसी डॉक्टर ने पूछा था, मे बी इट वाज अ संडे एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी, एंड यूजुअली ये नहीं पूछा जाता, इसलिए आई एम डिस्कसिंग दिस, बट एट योर लेवल probably this will not be required. So PT normalization within 30 minutes आफ्टर IV विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन. विटामिन के देने के बाद में आपका जो पीटी है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, पिफका 2 जो है ये बढ़ा हुआ रहेगा, एंड व्हेन विटामिन के की क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी अगर हम देखते हैं, अगर उसको सस्पेक्ट करते हैं, तो हम एक जीनोटाइपिंग कर सकते हैं, बिकॉज एक ये एंजाइम है गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज, एंड इसकी डिफिशियंसी होती है, एंड दैट इज समथिंग दैट इज टॉक फॉर अनदर डे. We'll not talk about that much today. So now, आई होप दैट दिस इज क्लियर. हमें पीटी विटामिन के दे देते हैं, आधा घंटे के अंदर अंदर पीटी हमारा जो है वो नॉर्मल हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो नॉर्मल हो जाता है. सो नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट एंड द मैनेजमेंट. प्रोफिलैक्सिस इन न्यूबॉर्न्स, I've given the doses here, but I would suggest that please no one go for treatment, self-treatment. Vitamin K की जब तक clinically significant bleeding नहीं होती, you do not require to get yourself get these injections. मैंने आपको बहुत सारे sources बताए हैं. Please start eating more green vegetables, green leafy vegetables if you think that you might be vitamin K deficient. So prophylaxis in newborns is it's given. I'm not going to discuss the doses, it's written here. इसके अलावा विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग अगर किसी को हो रही है एंड एस्टैब्लिश हो चुकी है बाय मींस, राजेंद्र जी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए. विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो 1 to 2 मिलीग्राम विटामिन के 1 कैन बी गिवन बाय स्लो इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन, एंड सिवियर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उन्हें हमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी देना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से हो रही है तो ये डिजीज के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड मैल अब्जॉर्प्शन में इट विल रिक्वायर डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई डोजेस अराउंड 0.3 to 15 मिलीग्राम्स पर डे. सो अगर अगेन क्योंकि इसमें मैल अब्जॉर्ब आप जितना देंगे उतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो पेशेंट, सो यू हैव टू गिव इट इन हायर डोजेस, एंड अगर ओरल डोजिंग इफेक्टिव नहीं है तो पेरेंट्रल हमें मतलब हमें इंजेक्शन के थ्रू हमें उन्हें देना पड़ सकता है. एंड अगेन विटामिन की क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी अगर है तो इट इज अ डिफरेंट, अगेन आई सेड इट्स नॉट समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस टुडे. विटामिन के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन अडल्ट्स, मैल अब्जॉर्प्शन नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, so you would need to give around 120 to 90 micrograms per day. So remember, this is that was milligram, this is micrograms for men and women respectively, 120 to 90, 120 in men, 90 in women, by diet or oral supplementation. तो इसको आप इस चीज को आप ध्यान रखें. Tomorrow I will be sharing a table जिसमें लिखा होगा कितने ग्राम खाने में कितना आपको वो विटामिन के मिल सकता है, and accordingly you can choose. So let's start consuming more varieties of green vegetables if we think that we might be vitamin K deficient. So on that note, I think there are no questions today. Questions or answer ka time kal hai. So do send in your questions. I have some questions of yours that I have saved. I will be discussing that tomorrow. And जो बाकी की questions आपके दिमाग में अगर आ रहे हैं, please put it down on the chat box or send it to me in the WhatsApp group, and we will try to take it up tomorrow. So a big thank you to all of you for joining in and keeping the show alive. We'll be back tomorrow